and Strategy Management, an engineering graduate with work experience in reputed MNCs like Siemens, Johnson & Johnson's. With over 20 years of university teaching and research experience, he is a member in various committees of Ministry of Education, UGC, AICTE, etc., regular columnist for Hindu Business Line, New Indian Express and Times of India, author of 3 books on educational policies and a renowned speaker in various public events. Sir, आपके leadership experience और vision ने शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया है जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि एक कल्चर है. With decades of experience in academics, governance and institution building, you have consistently worked towards creating an ecosystem where students don't just study but evolve into responsible professionals and leaders. Sir, it's an absolute honor to have you with us here today. And now I would like to introduce Dr. V.S. Shankar Sriram, Dean, School of Computing and Tata Communications Chair Professor, SASTRA University. Sir, it is not just an academician but a nationally recognized educator, recipient of prestigious National Teachers Award 2025 conferred by the President of India under the Higher Education category. Professor V.S. Shankar Sriram is a distinguished academic leader and researcher with over 25 years of exemplary service. As Dean of the School of Computing and in charge of IT services, he has played a transformative role in strengthening academic quality, research capacity, and digital governance. He is internationally recognized for his contributions to cybersecurity, notably the JARA open source intrusion detection system and the ongoing METI-funded project Threat Intelligence for AISH, both of which demonstrate strong translational value and national relevance. His research spans machine learning, network security, and computational modeling, with publications in leading SCIE journals. As the head of the Center for Information Superhighway CISH, he established a high-performance computing and data processing ecosystem that has significantly enhanced institutional research capability. His leadership has also driven the strategic integration of educational technologies, including LMS platforms, virtual laboratories, and remote proctoring systems, ensuring inclusive and resilient learning environments. With extramural research funding exceeding 6 crore rupees from METI, DST, IBM, TCS, Tata Power and MHRD, Professor Shankar Sriram has demonstrated sustained research excellence, competitive grant acquisition capability and national level impact, reinforcing his stature as a leading contributor to cutting-edge research and innovation in computing and cybersecurity. Sir, we are truly privileged to have you with us here. नमस्कार. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल वेबिनार को. एक ऐसा फील्ड जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को चूज करना होता है, लेकिन क्या सबको पता होता है कि इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअली ऑप्शंस क्या हैं? तो दोनों ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स इस वक्त मेरे साथ हैं. मेरा सवाल आप दोनों को रहेगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जिनको लगे आप प्लीज क्वेश्चन मेरा लेकर के आंसर अपना शुरू कर सकते हैं. सर, अगर एक क्लास 12th के स्टूडेंट को आज इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या अपने ऑप्शंस इंजीनियरिंग की तरफ ले जाने हैं, तो उसे क्या कुछ प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए? माइंडसेट और स्किल दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या तैयारियां होनी चाहिए? Thank you very much. Dear students, I am sure most of you have completed your class 12 examinations and a majority of you
those who are aspiring for engineering would have also appeared for the JEE main examinations. Now is the time for you to relax, fall back, remove your stress levels, and focus on the next few steps that you're going to take that's going to fulfill your career aspirations. तो पहला सवाल था कि वो इंजीनियरिंग ऑप्शंस है, बहुत है, कैसे फोकस होना चाहिए। इसके ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इंजीनियरिंग पूरा रीडिफाइन हो रहा है। पहले था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये तीनों पहले वो कोर इंजीनियरिंग वही रिकग्निशन हुआ। नाउ दिस कोर इंजीनियरिंग हैज शिफ्टेड from these three major disciplines to a lot of emerging technologies and engineering applications. And then you see electronics engineering, computer science engineering, biotechnology, robotics and automation, artificial intelligence. So all of this is now becoming a very, very popular set of disciplines that make engineering education with more choices. But what is more important is to realize that any engineering program that you choose today is multidisciplinary in nature. So if I take mechanical engineering, still I have to know what is happening in electronics, what is happening in computer science. And likewise, if I take computer science engineering, I need to know the basics of mechanical engineering, electrical engineering, electronics. So moving forward, engineering education is becoming multidisciplinary, not only within the engineering domain, it is also going beyond the engineering domains. It's also including science, management, humanities, and all of that. So my short answer to the first question is engineering is getting redefined because the employment opportunities today requires skill set, which is also next generation skill set requirement. So when the skill requirement is next gen, we cannot follow the conventional engineering education pathways. We have to redefine the way in which engineering education is offered, and hence, as we enter the portals of engineering education, we have to think as if we are multidisciplinary specialists. It might appear to be a tautology. You have to be a multidisciplinary as well as a specialist. And that's how things are moving forward in engineering education. If Dr. Shankar Sriram can add more to it. Yeah. As pointed out by Professor Vaidya, that ये कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स का जो बाउंड्रीज है वो डिमिनिश हो रहा है कि वो मैकेट्रॉनिक्स एक ब्रांच ले लीजिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आज वो ज़माना चला गया कि भाई मैंने कुछ पढ़ा, मैकेनिकल पढ़ा, खाली मैकेनिकल सीखा, और इलेक्ट्रिकल पढ़ा, खाली इलेक्ट्रिकल सीखा। आप देखिएगा स्मार्ट व्हीकल्स, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सब में आपको कुछ कुछ स्किल्स जैसा मान लीजिए ओवरलैप होता है, जैसा मान लीजिए बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स तो हर एक को आना चाहिए, और एप्टीट्यूड टेस्ट तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हर एक का जब लास्ट में प्लेसमेंट के लिए जाएगा तो एप्टीट्यूड काम आएगा ही आएगा। ऑन टॉप ऑफ इट प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो the student should know what he is actually learning and where he is going to apply. और ये स्किल्स जो है तो आजकल बहुत सारा मॉडल्स अवेलेबल है, स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है, उसको स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करें। अभी जो छुट्टी जो है तो अभी से धीरे धीरे सीखना शुरू करें। तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग का ज़रूरत नहीं है, खाली उनको मॉडल क्या है, कैसे डेटा देना है, कैसे आउटपुट आ रहा है, इसको पहले समझना है। यानी कि आज का स्किल सेट ये भी चाहिए स्टूडेंट को कि इन एडिशन टू द कोर इंजीनियरिंग स्किल्स उनको उसको अप्लाई करना कहाँ है, कैसे टूल्स अवेलेबल है, कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू उसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसको आना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स दैट द स्टूडेंट शुड नो।
सर आपने बहुत अच्छे, आप दोनों ने जो जिन एस्पेक्ट्स पे स्ट्रेस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन पिछले कई सालों से, जो कुछ साल अगर मैं बात करूं पिछले 10-15 सालों से बहुत इवॉल्व हुई है, जिसके चलते मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर स्ट्रेस होना चाहिए, कन्वेंशनल वेज फाइंड करने चाहिए। जब हम उन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो आज के टाइम में एआई, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेज जैसी इमर्जिंग टेक फील्ड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स अपने स्किल्स और एस्पिरेशंस को, करियर एस्पिरेशंस को कैसे फ्यूचर रेडी बना सकते हैं? वो भी अच्छा सवाल है। पहले था इंजीनियरिंग एजुकेशन में जिस स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन से एनरोल हो रहे हैं, एक प्रोग्राम से एनरोल हो रहे हैं, एग्जाम्पल है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या हुआ कि पूरा 4 साल ये स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आसपास में सब्जेक्ट्स है वही पढ़ा है, सिर्फ वो स्ट्रेट जैकेट अप्रोच बोल रहा है। अभी तो मैंने बोला कि वो शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें केवल कोर्स चॉइसेस में शिफ्ट नहीं है, डिग्री प्रोग्राम में भी शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे मैं बता कि पहले assume that I am joining mechanical engineering, but today everybody thinks that computer science engineering is the most popular engineering discipline. But every institution in the country will have a cap. Not all students can join computer science engineering. So let's say only 300 students get admitted to computer science engineering in Shastra. Now, what will happen to other students who also want to study computer science or AI or data sciences or cyber security, all of these programs? Now, that is why we have introduced a new concept called minor specializations. So even if I choose mechanical engineering or civil engineering or electrical engineering, our engineering programs, BTech programs are designed in such a way that even if I am a mechanical engineering student, I can also get a minor specialization in artificial intelligence and data sciences. I can get a minor specialization in cyber security and IoT. Suppose I am a computer science engineering student, then I can get a minor specialization in management and public policy or supply chain management. So वैसे choices है, तो major discipline of study एक ही है और उसके अलावा minor specialization है, उसके साथ थोड़ा students का skill set थोड़ा value addition हो जाएगा. Now this value addition is highly expected out of the current generation of engineering graduates, which as a university, we are providing them with a major degree as well as a minor specialization. And students, when they choose this, their career opportunities, employment opportunities, higher studies opportunities are getting more number of options for them to choose from. So that is the essence of this curriculum flexibility for the students who can pursue a major degree and in addition also get a minor specialization certificate. और सर अगर मैं पूछूं आपसे कि कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर शास्त्र कैंपस में कैसा है? I'll take that question. एक यूनिवर्सिटी का पॉस्चर डिसाइड होता है उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, कितना वेल कनेक्टेड है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंटरनेट में 24/7 कनेक्टिविटी है कि नहीं, और हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा यूनिवर्सिटी फुल्ली वाईफाई एनेबल्ड इंक्लूडिंग एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स। तो इनको एक्सेस डिजिटल लाइब्रेरी के साथ हमारा सब्सक्रिप्शन है, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, IEEE ट्रांसैक्शंस डिजिटल लाइब्रेरी और ढेर सारे डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस है, ताकि बच्चों को रिसोर्स का कोई शॉर्टेज कभी ना पड़े। इससे अलावा हमारा यूनिवर्सिटी का कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट है। हमारे पास 34 पेटाफ्लॉप का कंप्यूट पावर है, जिसमें आप कोई भी एक GPU बोल दीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम K80 NVIDIA GPU है, A100 है, H200 GPUs है, तो बहुत सारा है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट DGX सिस्टम है जो स्टूडेंट्स का कंप्यूट
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। और हमारा सारे लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स जो भी है बच्चों को या कोई भी डिपार्टमेंट की ओर से जो भी रिक्वायरमेंट्स आता है वो सेंट्रली हम होस्ट करके रखते हैं, और सारे स्टूडेंट्स और सारे फैकल्टी फ्रॉम द कैंपस एज वेल एज आउटसाइड द कैंपस वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस कर सकते। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो जैसा मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स अभी इन एडिशन टू व्हाट प्रोफेसर वैद्या वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिमिनिशिंग बाउंड्रीज अक्रॉस दीज डिसिप्लिन्स, तो इन एडिशन टू माइनर स्पेशलाइजेशंस हमारा जो प्रोजेक्ट्स है माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट वो इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, यानी कि कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रोजेक्ट कर सकता है। दो आई एम नॉट अ मैकेनिकल प्रोफेसर, मैं आई कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम द एआई पर्सपेक्टिव और आई कैन कंट्रीब्यूट ऑन द साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो उनका कोई इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो स्मार्ट इंडस्ट्रीज का कुछ ले रहे हैं, तो उनका मैकेनिकल की ओर से एक प्रोफेसर इनपुट्स देंगे और मेरे से वो लोग इनपुट्स लेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो ये अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि उसके लिए आपको एक टेस्ट बेड चाहिए होगा, तो हर एक का टेस्ट बेड्स हमारे पास है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम AR/VR में कोई बच्चा का इंटरेस्ट है तो AR/VR के लिए डेडिकेटेड लैब है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड लैब है। ऑलरेडी आई हैव सेड दैट 34 पेटाफ्लॉप का एक ह्यूज कंप्यूट पावर है, और सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स उस HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर में होस्टेड है, तो सारे स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे अलावा आपको डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैसिलिटी है, और वी डू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भी फैसिलिटीज है। तो ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो या मैकेनिकल का है, सिविल का है, कोई भी स्टूडेंट आके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना चाह रहा है या एक्सेस करना चाह रहा है, तो द लैब्स आर ओपन। तो ये एक ओपननेस देता है स्टूडेंट्स को कि कहीं भी वॉक इन करें तो वो टेक्नोलॉजी सीखें, वो अपना डोमेन से रिलेटेड क्या इसमें फायदा ले सके, तो वो अपना इंडिविजुअलिटी भी उसका ग्रो हो जाएगा उसमें। या टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी लें और फ्यूचर रेडी होने के लिए जिन भी एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी वाइज आपके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए, वो शास्त्रा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। आपके नज़रिए से आप दोनों के बीच में ये सवाल है कि आपके अकॉर्डिंग या आपके नज़रिए में इंजीनियरिंग चूज़ करते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिससे उनको बचना चाहिए? Shankar Sriram, you want to answer first? I'll then answer. Yeah, I understand. तो सबसे पहला गलती है कि खाली कंप्यूटर साइंस पढ़ने से हमें नौकरी मिलेगा। ये एक इल्यूशन है, एक माया है। तो आप ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने से नौकरी मिल जाएगा, यही पढ़ने से हमें नौकरी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना है, पर कोई भी डिसिप्लिन ले लें उसमें वो एक्सेल करें और उसका अलाइड स्किल्स, उसका इंटरेस्ट है, वो भी सीख सकते हैं। प्रोफेसर वैद्या में प्लीज ऐड। See, in addition to that, सबसे पहला ये तो समझना पड़ेगा कि जो कोर्सेस है पॉपुलर कोर्सेस है ना, एक अंग्रेजी में एक कोट है, पॉपुलैरिटी विल कम विथ नो इन्विटेशन एंड इट विल लीव विथ नो फेयरवेल। सो ये तो है पॉपुलर कोर्सेस है, पूरी स्टूडेंट्स लोग कंप्यूटर साइंस कोर्स के पीछे चल रहे हैं। लेकिन आज है जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है, सेमीकंडक्टर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन वो ग्रोथ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन जैसे हाईवेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वैसे वो तो ग्रोथ है। नाउ दीज ग्रोथ एरियाज रिक्वायर गुड civil engineers, good mechanical engineers, good electronics engineers, and also all this AI computer science require good computer science engineers. Now we are living in a time period where there is growth in different domains of engineering. That is what students have to understand. Computer science is not the only area of growth. It used to be before because our exports were IT services led. But today we are exporting electronic components to the world. Today we are setting up our own semiconductor chip manufacturing units in our country. We are building huge highways and bridges across the country.
So we are seeing it, and we have to believe that the next 15 years of the growth in India is going to be so huge that you require all types of engineering graduates. And in addition, despite all this, after all, a student is a student. He will always say, no, 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 I still want to study computer science. Even then, you have an option. If I get electronics engineering, I study electronics engineering and a minor specialization in computer science and AI. That is the most powerful combination that an engineering graduate can have. Just a management graduate or law graduate, if both are available in one degree program, or economics and law, if both are available in one degree program, इतना advantage है ना. वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस अमेलगमेट करके एक डिग्री प्रोग्राम, ये तो इतना पावरफुल है. सो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट शुड नॉट कमिट इज just madly running behind computer science courses. There are other courses in which computer science can be embedded. That is one. The second, the short and sweet advice that I have is, please don't be in a hurry. Wait, get your marks, get your results, apply, and then join institutions based on certain public information that is available. Look at the institution website, look at their NIRF ranks, look at their accreditation, look at what their placement percentage is, look at what their facilities are. Do a thorough homework. Don't join because your friend joined. Don't join because you saw big newspaper advertisements. Do your homework first and then take an informed decision. ये जो कॉमन मिस्टेक कि आप दोनों ने बात करी कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा इंजीनियरिंग में फील्ड होता है जिसको लेकर के लोगों का, स्टूडेंट्स के बीच में क्रेज़ ज़्यादा होता है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिनको अमेलगमेट करके एक नई वैरायटी दी जा सकती है जिसमें अगेन फ्यूचर रेडी किया जाता है स्टूडेंट को. तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे आप परेशान हो. इसी के साथ साथ जैसा कि आपने एक लॉ के बारे में बात की, तो स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि पैशन फॉलो करें या प्लेसमेंट पोटेंशियल. इंजीनियरिंग चूज़ करते वक्त स्टूडेंट्स को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? इंजीनियरिंग के साथ साथ एक और फील्ड जो रैपिडली ग्रो कर रही है और जो आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट हो चुकी है, वो है लॉ, जिसकी बात आपने अभी करी भी. लॉ एक आज कोर्टरूम से काफ़ी आगे जा चुका है. टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और एआई की ईरा में लॉ बिजनेस, पॉलिसी, गवर्नेंस और मेजर सेक्टर्स में इंटीग्रेटेड है. क्या कहेंगे? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है. अभी तो लॉ भी इतना इवॉल्व हुआ, लॉ कोर्सेस सिर्फ वो थियरी का कोर्स नहीं है. सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स कोर्ट जाके प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ, not only for that they are getting prepared. Law today is social engineering. So lawyers today are also involved in public policy. They are also involved in constitutional jurisprudence. They work for law firms. They do desktop research, coming out with a lot of inputs that frame the future legal discourse. And today corporates are also hiring a lot of lawyers because today business is getting globalized. There's a lot of mergers, acquisitions, contracts, which are all sensitive to various jurisdictions across the world. So lawyers today are not just prepared for courtroom appearance on Indian Constitution. Today, they are also, just like engineers are becoming very multidisciplinary and global, lawyers are also now beginning to think beyond conventional advocacy. They are also into policy advocacy. They are also spending a lot of time in research on what is happening in different parts of the world, in different constitutions. They do comparative jurisprudence. So law is also becoming an equally important career option for the students. And more importantly, the good thing is, in law, you don't have to wait for somebody to recruit. The moment you graduate, you just go and enroll into the bar and you are a self-made entrepreneur yourself. You can start practicing and then you can start
giving advisory services. So a law graduate becomes a self-evolved individual all by himself, and also if opportunities are plenty, they also get molded by some of the best legal minds in the country. Dr. Sriram, would you like to add something to it? Yeah, as pointed by Professor Vaidya, the lawyers are taking a very big role, and इसमें वो कन्वेंशनल वो वकील जो है हाथ में कागज लेके वो जमाना चला गया। तो वो सब आजकल का इस जनरेशन का जो भी लॉयर्स है वो सब कुछ टैबलेट में रख रहे हैं और दे आर क्वाइट आईटी सेवी। और उनका जैसा मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स लॉ से भी हमसे आके बात करते हैं कि कोई जैसा मान लीजिए कोई डिजिटल फॉरेंसिक्स का रिलेटेड कोई सवाल है, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि विच हैज टू बी सीन एज एविडेंस, विच शुड नॉट बी सीन एज ए डिजिटल एविडेंस। ये कैसे इसको हम एविडेंस को एक्यूमुलेट करें तो और इसको कैसे प्रिजर्व करें, इससे रिलेटेड भी कोर्सेस हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ। जैसा मान लीजिए कि कंप्यूटर क्रैश कर रहा है, उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ है, उससे कैसे डेटा रिकवर कर सके, तो ये इसके बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से जो लॉयर्स जो बन रहे हैं जो खाली वो सेक्शंस और सब सेक्शंस को रखते नहीं है और अभी वो अप्लाई कर रहे हैं कि ये इस एविडेंस को कैसे हम यूज करें, डिजिटल एविडेंस को कैसे यूज करें, ये सब उनका अप्रोच में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप ये कह रहे हैं कि खाली लॉ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रॉन्ग है या आउटशाइन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्किल्स हैं जिनमें आपका इंस्टीट्यूशन उनको होन करता है, उनको स्प्रूस अप करता है, जो कि ज़रूरी हैं लॉ के लिए। स्टूडेंट्स है पहले इतना मूट कोर्ट है एक, जैसे इंजीनियरिंग में लेबोरेटरीज है ना, वैसे लॉ स्कूल्स में मूट कोर्ट इतना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट एक्सपीरियंस है। They mimic courtroom. They go to different law schools. There are problem statements. They go participate, argue. And Shastra Law School is one of the premier law schools in the country where students participate in different moods and they win a lot of prizes and come. And that gives them a real-time experience also. Right. जैसे स्टूडेंट्स दूसरा लॉ स्कूल जा रहे हैं ना, वैसे हमारा मूड कोर्ट का नाम है नानी पालकी वाला टैक्स मूड कोर्ट कंपटीशन है। नानी पालकी वाला है, इतना बड़ा जूरिस्ट था पहले, इंडियाज बेस्ट लीगल माइंड वाज नानी पालकी वाला, एंड इन हिज ऑनर वी एवरी ईयर कंडक्ट द नानी पालकी वाला टैक्सेशन मूड, which is India's #1 tax moot that happens in Shastra Law School. Students from different law schools come and participate in that moot. So law, the experience, the practical experience comes from moot courts. The second practical experience for students, we also conduct a lot of legal aid camps. We go to different places around our university, many villages, rural areas, conduct legal aid camps. We provide legal assistance to those sections of the society who don't have access to formal legal institutions. Of all the law schools in the country, Shastra ranks #1 in the number of legal aid camps that we conduct. In fact, we have conducted 99 so far, and by the end of this month, we would have conducted 100 legal aid camps by the law school, and that's #1 in the country. That's legal aid. We also prepare students on use of AI. Now, what we are also doing is we are embedding AI in all degree programs, not just engineering, in law, in management, in science, in education. All of these degree programs, we are embedding AI. So we also have a very, very carefully designed course called AI for Legal Professionals. So that also gives them a kind of a practical experience of knowing how to use AI in their legal profession. So law also has a lot of fieldwork experience, fieldwork learning, and the students are really enjoying this type of learning, which is more hands-on for them to ensure that they become successful law graduates. और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अगर इस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है, लॉ प्रोफेशनल्स को के रोल को आप कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं फ्यूचर में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए? लॉ प्रोफेशंस के लिए जी,
देखिए कि ये lawyers है, they are the ones who actually frame the way in which different domains function in our country. See, after all, our country, we have a written constitution. The constitutional framework is the guiding principle for institutional growth as well as individuals' conduct and discipline in a society. So, for a growing country like ours, where there is a lot of growth in both economics, trade, and also the way in which individual expectations are changing, the role of lawyers are also getting very, very important. For example, let's say we are starting a new enterprise with some contracts by collaborating with some foreign organization. Contracts form the essence of partnership. So lawyers' role in making sure that the contract is actually foolproof, they are very, very important. Even bilateral, countries to countries sign a lot of treaties, so disputes arise. So the role of lawyers in settling bilateral or multilateral disputes is very, very important, especially when a country is growing. A growing country will always have a lot of partnerships that are required for it to grow. So when there are more partnerships, which means there are more number of parties involved in the growth, then the role of lawyers also become very, very important. The third most important thing is every lawyer is also a duty bound citizen of the country. So they are the ones, as I told you before, they are responsible for some progressive social engineering. So they also have to contribute to the evolution of jurisprudence in our country, just like freedom of expression, rights, responsibilities of citizens. They are the ones who actually have to be the ambassadors of the constitutional jurisprudence in our country to make sure every individual understands their rights as well as the responsibilities that they owe to the country. So the legal profession is also becoming very, very multidimensional. मल्टी डायमेंशनल एंड डॉक्टर श्रीराम, आपका भी मैं रिएक्शन लूंगी कि अगर एक स्टूडेंट क्लास 12th के बाद लॉ चूज करता है तो उसको किस तरह की प्रिपरेशन और माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा? He has to clear the CLAT exam, and that is one thing that he has to focus on. And he has to choose the right college. कहाँ इनको ये सारे exposures मिलेगा? और जैसा मान लीजिए वर्चुअलाइज्ड कोर्ट एनवायरनमेंट, जैसा मूड कोर्ट एनवायरनमेंट अच्छा खासा उनको तैयारी कर देता है, तो ये सारे होमवर्क उनको करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एडमिशन टू अ राइट लॉ कॉलेज. एंड इनको जहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और देश का सबसे लीडिंग लॉयर्स जो भी है वो लोग आके बच्चों से इंटरेक्ट करें. हमारे यहाँ पे जैसा वैद्या सर ने बताए थे कि हमारा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है और हमारा नानी फलकी वाला मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है, टैक्स मूटिंग है, तो ये सब में उनका अच्छा सीनियर एक्सपर्ट्स के थ्रू एडवाइस भी मिलेगा. और अभी जैसा मान लीजिए कुछ AI इन ADR, AI इन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से जो चल रहा है. तो इतना सारा एक्सपोजर जब मिलता है तो उसके हिसाब से उसको चुनना पड़ेगा. जैसा वो तैयारी कर रहा है कि इस कॉलेज में जाएं कि ये फीचर्स है मुझे, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब एक्सपोज करें, फिर उसके बाद वो एडमिशन ले लें. प्रोफेसर वैद्या. I will add one more that is specific to law admissions at Shastra. See, now CLAT examinations are over. All students who want to join law schools, they have CLAT scores. At Shastra Law School, the law admissions happens in 2 phases. The first phase applications are available online, for which the admissions will be based only on CLAT scores, for which April 18th is the last date. And then April 20th, we will release the first list of students who will be admitted based on CLAT scores. Then after class 12 results are released, उसकी बात है क्लास 12 रिजल्ट्स प्लस क्लैट स्कोर्स दोनों को एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके बाद में सेकेंड फेज में एडमिशंस लॉ स्कूल के लिए सेकेंड फेज जून फर्स्ट वीक इट विल स्टार्ट वेयर एडमिशंस आर बेस्ड ऑन क्लास 12 scores and CLAT scores. So that's how the law admissions at Shastra will happen.
राइट और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब स्टूडेंट्स ऑप्शन समझ चुके हैं कि सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है कि कहाँ से पढ़ाई करें, because the right college doesn't just give a degree, it shapes your entire career trajectory. To understand more, let's watch this AV. जैसा कि बात हो रही थी कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर लीडर्स की तरह ग्रूम कर रही है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता है कि हाउ कैन शास्त्रा ग्रेजुएट्स फ्रॉम वेरियस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर एन एआई स्किल रिक्वायरमेंट। आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है। Very important question. I'll give a very short answer. As I explained, every degree program offered by Shastra, we are now coming out with a new policy where it is X plus AI, which means X is the degree program and AI is embedded into any degree program. But in engineering programs, the extent or the ratio or the proportion of AI that gets into the engineering program is relatively higher. So mechanical or civil or electrical or biotechnology or even computer science, IT, there is more of AI into the degree program. So every degree program in engineering will have AI along with it, not just as coursework. The way in which students will learn the engineering program itself will be through an AI assisted platform. Our LMS will be AI assisted. Our assessments will be AI supported. Our teaching learning will be AI triggered. Some of our classroom materials, we will use AI tools to convert them into video lectures and make it more interactive and interesting. Some of the PowerPoints, we will use caricatures, cartoons, and using AI tools to make it more interesting for the student. So that is how the AI is embedded into all the degree programs, not just by coursework, but the way in which students learn their subject itself using AI as a support tool is making the subject of engineering very interesting for the students. Shankar, you have to add anything? Yes, sir. So students को जैसा मान लीजिए हम AI को जो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर। तो हर कोई प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता। तो जैसा मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स और सर्किट ब्रांच का स्टूडेंट्स जो भी है वो प्रोड्यूसर का रोल फॉलो करें, और अदर स्कूल्स कैन इजीली अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजीज दैट आर डेवलप्ड आउट ऑफ द circuit branch students. This is one thing, right? Now, अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को क्या AI से रिलेटेड स्किल्स चाहिए। सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन एक बहुत ज़रूरत है, तो उनको पाइथन थोड़ा तो सीखना चाहिए। और क्या क्या टूल्स है अभी अवेलेबल है, कौन सा AI टूल को कहाँ यूज करें, इतना उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट डिमांड्स दैट काइंड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट नाउ कि आपको AI एम्ब्रेस करना ही है, तो आपको उससे हटके नहीं जा सकते जी। और अगर बात करूं प्लेसमेंट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से, तो शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम
काम कैसे करता है और how does SASTRA prepares the students beyond classrooms and campus? Yeah, all the engineering programs at Shastra have a very strong industry collaboration. For computer science, we have some of the top recruiters like Amazon or PayPal or the TCS or Walmart. Many of these are partners to our computer science engineering program. Likewise, in electronics, we have partnership with Tata Electronics, Keynes, for mechanical engineering with the Bajaj, the TVS. So every engineering program has a very strong industrial partnership that comes along with it. The moment our degree programs are having very, very reputed industry partners, the quality of the engineering program itself is increased. One. So program quality is addressed. The second thing, what the industry requires is about student quality. Now, the way in which we admit our students is based on JEE main scores and class 12 marks put together. So when students come from a very, very transparent and merit-based admission, the industry knows, the recruiters know that the students are already filtered and they are admitted based on their merit and their performance in class 12 and JEE main. So student quality is also ensured. And the third thing is the curriculum flexibility and the quality of faculty and the teaching learning ecosystem that maximizes the learning outcome of an engineering graduate. So top three things that every recruiter expects from a graduate is that the curriculum has to be industry ready, which is the case in Shastra because all the programs are having a collaborative industry partner. Student quality is high. We ensure that with our very, very transparent and merit-based admissions. Third, learning outcomes are maximized. The way in which we are going to use AI and the quality of the faculty and the quality of the teaching learning process and the assessments are so creative that the learning outcomes are also getting maximized. So when all these three parameters are maximized, placement becomes a natural affair at Shastra. Almost every student gets placed in some of the reputed companies. Not only placement, some of the students go and join for higher education abroad in some of the reputed universities because we already have existing collaboration with various foreign universities, thereby giving them a chance to also go for higher education outside India as well. और जैसे कि बात भी हो रही थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को लेकर के कि जिस तरह का क्रेज़ है स्टूडेंट्स में इस कंप्यूटर साइंस को लेकर के जिसके चलते वो एक ही पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में, ऐसे में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की अगर मैं आपसे बात करूं नॉन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में, तो क्या वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट देख करके आगे बढ़ सकता है कि अगर नॉन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम को अवेल करना चाहे? हाँ, ये तो मैंने पहले कहा था कि इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047, a developed India is not going to happen with development only in IT services. So a developed India at 2047 will happen only if there is going to be good infrastructure, roads, bridges, highways, power, everything. A developed India will happen only if this manufacturing output is going to increase. A developed India by 2047 is going to happen only if we are able to export not just computer software services, but also electronics, chips, components to the world. So when we look at how we are going to see the country by the end of 2047, we will realize that development is going to happen in all the engineering disciplines. So the growth opportunities hence is going to come from all engineering disciplines and not just computer science engineering. But what is going to happen today is the way in which we studied mechanical engineering, the way in which we studied electrical engineering, the way in which we studied civil engineering, that is getting changed. I am now going to use some IT, some computer science, some AI to understand mechanical engineering. So every mechanical engineering will also know AI. So that is the way in which growth is going to happen, and every student
whether he is a computer science or mechanical engineering, will definitely be a part of the growth story. Right. आप दोनों से अगला सवाल मेरा रहेगा कि what are the global opportunities being an UG student, undergraduate student at SASTRA? Okay. See, as I just mentioned very briefly, we have very good collaboration with some of the best universities in North America, in Europe, in Singapore, Australia, and all of that. We have a Desh Videsh scholarship scheme where a student can go to some of our partner universities and spend one full semester, and then we give them a stipend, we pay them airfare, and then they go there to do their 8th semester project, research project. And if they do well, they also get admissions into those programs. This is one. Second, we also have a 3+1 collaborative degree program with some foreign universities where students study 3 years at Shastra, 1 year in a partner foreign university. And that they can do in computer science, they can do in mechanical engineering, industrial engineering, and many of these engineering programs. Those are the global opportunities. The VLSA program at Shastra is very unique. They can actually go to Taiwan for hands-on experience for some of the advanced VLSI technologies. And these are funded by Tata Electronics, funded by Digital Electronics, Delta Electronics. These are companies that fund these students to go abroad. So the global opportunities for students are plenty in the sense that they get an opportunity to go and study one semester abroad and also get enrolled into their master's or PhD programs, and they also receive some scholarships from Shastra to pursue these type of global opportunities. Some universities I can name, like they go to the Harvard, they go to the HST, under the HSTA program, they go to Penn State University, they go to Texas at Austin, they go to SUNY Binghamton, they go to University of Wisconsin at Madison, likewise many universities in Europe and Australia. All very good universities. Japan is also a very good partner with us. They also go to Japan. जी, एक और इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा आपसे मेरा कि अगर आप मुझे मदद करें समझने के लिए कि अबाउट द स्ट्रिंग इंडस्ट्री कनेक्ट फॉर शास्त्रा स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ रिक्रूटमेंट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. Yeah, so the experiential learning will happen if the quality of the infrastructure that is available in an academic institution is of industry standards. Now, what has happened in the last 5 years at Shastra, our investments in academic infrastructure have been provided by big corporates like Bajaj, the Tata Group, the TVS Group. Many of them have invested, and also some of the government agencies like the Ministry of Heavy Industries, the Department of Science and Technology, MeitY. So many of these funding agencies, thanks to them, we have created a very good infrastructure on campus. And that is why the programs are designed in such a way that it is only 30% that the students will spend in these career track programs inside the classroom, while the remaining 70% is experiential, immersive in the laboratory, where the quality of the infrastructure is of world-class quality. And that makes the engineering education very experiential, immersive, hands-on for the students. And that makes the difference between a Shastra graduate and a graduate from a different university. और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एट शास्त्रा, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे. इफ दिस हैज टू बी अ डायरेक्शन फॉर देम. Okay, that's a very good question. In fact, the admissions to Shastra will happen online, and it will happen in a very transparent manner based on merit. Now, how do we calculate that merit? As I told before, every student will be given a rank based on his JEE main scores, which is 50% weightage, and class 12 marks, which is 50% weightage. Each put together
we will release a rank list after they submit their applications with both these scores. Based on the ranks that they secure, they choose the engineering options that they want with priorities, and based on the ranks, they are admitted to a particular engineering program and they pay the fees to join the program. That's one. Second, after they join, there are also a lot of scholarships for the students. We also give some cases even full tuition fee. And for students from northeastern states or some challenged states, there is also a special provision. Now, there is also a plan to visit some 6 cities like Varanasi, Patna, Lucknow, Jamshedpur, Ranchi on May 1, 2, 3, because by now, by May 1, 2, 3, JEE Main 2 results would also have been released. Right. So we will do a spot counseling that time also, for which we will advertise. So that time students with JEE results can come and participate in the spot counseling, and that will also be done based on merit only, which is based on the JEE main scores, and we will admit the students on May 1, 2 and 3 as well. So please watch out for some advertisements during the last week of April, where we will also share some more information about the spot counseling. But now the applications are also available online at www.shastra.edu, so that you can start applying and be ready for the admission process as well. This was indeed insightful. चलिए अब इस सेशन को थोड़ा सा और क्विक और एंगेजिंग बनाते हैं रैपिड फायर के साथ. आप दोनों से मेरा एक एक सवाल रहेगा. एक सवाल मैं आपसे करूंगी डॉक्टर सुब्रमण्यम, एक सवाल मैं आपसे करूंगी डॉक्टर श्रीराम. सबसे पहला और एक जल्दी से इसको, क्योंकि रैपिड फायर नाम ही है तो इसका जवाब आपको बहुत क्विकली देना होगा. सबसे पहले मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम, एक स्किल जो हर स्टूडेंट को आज से डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग. डॉक्टर श्रीराम, एक मिथ अबाउट इंजीनियरिंग या लॉ जो आप बर्स्ट करना चाहेंगे. अदर देन कंप्यूटर साइंस कहीं और नौकरी नहीं मिलेगा. बिल्कुल, जिसके ऊपर बहुत देर से हमारी चर्चा भी चल रही थी, बात भी चल रही थी, और जो एक ऐसी चीज है जो आप दोनों प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से कि इस मिथ को ब्रेक किया जाए. एक और मैं कोई रैपिड फायर ले लूं सवाल आप दोनों से. हाँ. डॉक्टर सुब्रमण्यम, सक्सेस के लिए एक वर्ड क्या रहेगा. हार्ड वर्क. हार्ड वर्क. डॉक्टर श्रीराम, आज के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस आप क्या देंगे. Skip out of lethargy. Come out of lethargy. Come out of आलसी lethargy. नहीं बनना. कंफर्ट जोन में जो चले जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, और वहीं पर अपना एक सेफ स्पेस ढूंढ लेते हैं. बहुत ही इंसाइटफुल अभी तक का ये पूरा डिस्कशन रहा है. कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, हमारे स्पीकर्स को लेकर के हमारे पास हैं, हमारे व्यूअर्स के. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू शेयर कि इंटर्नशिप का एक्सपोजर कैसे मिलता है शास्त्रा यूनिवर्सिटी में. Internship ka exposure starts right from the second year itself. It is not that they will do internship only in the 4th year. We provide opportunities for students to start their internship from second year by mini projects, by Indian Academy of Sciences fellowships एक scheme है, उसको भी internship they can try and get. And we also have a lot of collaboration with the industry also, where they will host our students for the summer and winter vacations as small short-term sabbaticals for students to go and get some hands-on experience. So right from the second year, students will be given the opportunity to work in different places, not only in industry, they can also go to research labs in IITs or many of the premier institutions to work as research interns. And then in the last semester, the 8th semester, actually the 8th semester at Shastra is only for internship. There is no need for them to stay on campus because the 8th semester courses are all online. So they can go wherever they want to do their internship. But they can start doing their internship from second year onwards. Wow.
कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन है, हालांकि प्लेसमेंट्स को लेकर के हमारी बात हो चुकी थी, तो आप दोनों में से कोई भी गेस्ट अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं कि प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर आप हमें बता दें तो अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स है जैसे हमने पहले कहा था, quality of students, quality of infrastructure, quality of teaching, learning, all the three are adequate at Shastra. And we also prepare the students for placements. We do a lot of soft skill development, personality development for the students. And with engineering knowledge, along with soft skill and personality development, their recruitment employability increases. And that is why many of the top recruiters, as I mentioned, whether it's Amazon, Wells Fargo, TVS, or Microsoft, many leading recruiters come to Shastra. And for 2026 batch, roughly around 250 companies, plus 250 plus companies have come and recruited, and close to around 4,000 job offers have been made. So Shastra is one of those progressive, reputed private universities where placement is an opportunity for the students to actually choose from more than one employer. There are some students who also have 2-3 employers, they have 3 offers also. So that is the type of placement that is available for the students. Having said that, it is also the students' responsibility to prepare themselves when recruitment happens. It is not a guarantee to a job. That is why I said hard work is necessary. You have to prepare yourselves because companies will keep on coming. You have to be ready to make sure you get a job in those recruiters list. Very well said. Very well said. Dr. Sriram, maybe you can take this question कि industry collaborations के examples कुछ और share कर सकते हैं आप? हाँ ज़रूर, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस जैसा मान लीजिए हमारा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैब्स है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लैब है, टाटा कम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी लैब है। जब थोड़ी देर पहले वी साहब बतला रहे थे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इम्पैक्ट क्या होता है करके, जैसा मान लीजिए स्टूडेंट्स को हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं तो उसको खाली कहानी बताने से उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जब हम स्टूडेंट्स को एक लैब दे रहे हैं, जैसा मान लीजिए टाटा कम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी लैब में, ये एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है जिसमें कोई भी अटैक करके देखे, बच्चे हैंड्स ऑन करके देखे। लगभग 10.5 लाख का मालवेयर सैंपल्स उसमें है। तो वी डोंट स्टॉप विथ थ्योरी, और उनको हैंड्स ऑन मिलता है कि रियल मालवेयर्स में काम करने के लिए। ऊपर से हमारा फैकल्टी लोगों को इंडस्ट्री टाई अप के साथ क्या फ़ायदा है कि हर समर वेकेशन में FDP चलता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो अलाइनिंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है उसके हिसाब से अपना फैकल्टी को ट्रेन हो जाएगा। ऑलरेडी वीसी साहब ने बताया थे कि हमारा करिकुलम डिजाइन में भी इंडस्ट्री लेड प्रोफेशनल्स आर देयर। सो आपका करिकुलम इंडस्ट्री का साथ टाई अप के साथ बना हुआ है, और हमारा फैकल्टी ट्रेंड है, और लैब्स भी उनका इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैब्स है। सो दैट मेक्स इट एज अ कंप्लीट पैकेज। तो उनका डेरिवेटिव जो इवेंचुअली उनका जो प्लेसमेंट्स और इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली बनना ही है। राइट। ये मुझे लगता है कि ये पूरा होलिस्टिक एक डेवलपमेंट, फ्यूचर रेडी, फ्यूचर लीडर्स रेडी, टेक्नोलॉजी रेडी, ये एक शास्त्रा एक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट्स रेडी फॉर अ बिगर रोल इन द सेक्टर. Thank you so much, Dr. Subramaniam, and thank you so much, Dr. Sriram, for such insightful and valuable inputs which you shared with us. Thank you very much, and I hope I see a lot of students from that part of India coming to SASTRA University in Tanjavur. Thank you very much. लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो वी आर सेलेक्टिंग व्हाट ऑल क्वेश्चंस वी कैन आस्क यू बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. So again, there are 3 questions which have been posted and which are very relevant. I would request you to please answer. Corporate law or litigation में से बेटर ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं? I mean, so many questions, and I think a lot of people are enjoying this discussion which is happening.
Corporate law versus litigation. See, my personal advice to the student who asked the question is go for litigation, get a good senior advocate, get trained under a senior advocate, start practice, because only if you practice in the bar, you will be able to enrich the bar. If your first job is going to be in corporate litigation, that is also a good career proposition, but you might become rustic over a period. Start with practice and then jump to corporate law, because then you would have developed some native intelligence by practice. राइट डॉक्टर श्रीराम, आप मे बी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. इंजीनियरिंग के बाद हायर स्टडीज बेटर है या जॉब? नहीं, 3 ट्रैक्स है, वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है. चाहे तो वो आगे पढ़ सकता है, चाहे तो वो नौकरी के लिए जा सकता है, चाहे तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. तो ये तीनों पाथवेज है उनके सामने. तो उनका इंटरेस्ट क्या है? तो अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, उसके भी हमारा पास अपॉर्चुनिटीज है. तो हमारा 3.5 1.5 प्रोग्राम्स चलता है, जहां उनको इंटीग्रेटेड एमएस उस फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिल सकता है, या फिर गेट एग्जाम लिख के इंडिया में ही उनको अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना, मास्टर्स के लिए जाना, वो भी ऑप्शन है. और इट प्योरली डिपेंड्स ऑन उस समय का इंटरेस्ट चेंजेस ओवर पीरियड. I also would like to add, also look at your family responsibilities also. If you think your family requires you to start working, please take a job. Your first job really makes a huge difference. If you want to do MBA management education, go with a work experience, because that will add value to your MBA education. So also fall back and ask your family members, what is the compelling need for a career decision that you have to take? So that should be a decision where, in addition to individual aspirations, let it also be a family decision. Correct. And I think the next question also, Dr. Subramaniam, you can take this question. लॉ चूज करने के लिए, हालांकि इस पर बहुत इलाबोरेट डिस्कशन हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सवाल है कि लॉ चूज करने के लिए कौन सी स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं एक स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए शार्प communication skills, the capacity to respond spontaneously. See, many of the arguments, many of the advocacy skills require a capacity to spontaneously respond, and the confidence to seize the opportunity that you will definitely win a litigation. Don't wait for somebody, your senior, to come and help you out. The confidence to win a litigation on your own, that is essential for a successful lawyer, and that will come only if you are able to practice trial advocacy in the bar. So go and practice, that will make you perfect. And I'm so happy that these last minute questions in the comment box, it clearly testifies that there are a lot of students, parents, people out there who are watching our discussion here. Indeed, once again, I would like to thank Dr. Subramaniam and Dr. Sriram for this insightful, knowledgeable and thought-provoking discussion which we just had. आज के सेशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि करियर चूज करते समय डिसीजन इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आपकी ज़िंदगी की, आपकी जर्नी की एक बहुत अहम और ख़ास शुरुआत होती है. और इस जर्नी में क्लैरिटी, गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म बेहद ज़रूरी होते हैं. करियर कंपास का पर्पस भी यही है कि आपको डायरेक्शन देना, कंफ्यूजन दूर करना और आपको एम्पावर करना टू मेक अ राइट करियर चॉइस. आइए एक बार फिर से देखते हैं शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक झलक.
और दैनिक जागरण और शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी की ओर से मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी स्टूडेंट्स को आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देती हूं। ऑन बिहाफ ऑफ दैनिक जागरण एंड शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर कॉलिंग।